Christmas is not a season, it is a feeling of perpetual hope. Hi guys, this is Architect Deepthi from Transform. Hope you all are in high spirits. I hope you are religiously watching my videos and liking them. Please do share and subscribe to my channel as well. Christmas is all about lights and beautiful colors. The aroma of cakes and scented candles could be felt in the air. So, today in this video, I'm going to show you how we can revamp an old beautiful candle and restyle it for our Christmas decor in different ways. So, let's get started. I had this red candle which was gifted to me by a dear friend. As this is quite an old candle, so ये थोड़ी सी फेड होने लगी थी, तो मैंने इसे रिवैम्प करने का सोचा. I wanted to give it an ethnic look. इसलिए मैंने इस पर ये हिना डिज़ाइन बनाने का सोचा. Of course मैंने इसे as it is कॉपी तो नहीं किया, but I selected it as an inspiration. I started drawing these हिना patterns. मैंने यहाँ एक्रिलिक पेन्स लिए हैं. एक्रिलिक पेन्स की खासियत ये है कि ये किसी भी सरफेस पे स्मूथली यूज़ किए जा सकते हैं. मैंने यहाँ सिंगल कलर यूज़ करने की बजाय मल्टीपल कलर्स यूज़ किए टू गिव इट अ ब्राइटर लुक, क्योंकि यह काफ़ी डल लगने लगी थी बिकॉज इट वॉज गेटिंग फेडेड अर्लियर. मल्टीपल एंड कंट्रास्टिंग कलर्स यूज़ करने की वजह से ये काफ़ी ब्राइट दिखने लगी थी. तो इस तरह से मैंने इसे एक्रिलिक कलर्स की मदद से पेंट किया बहुत ही इजीली और एक ओल्ड एंड फेडेड कैंडल को नया लुक दिया. तो आपने देखा कि हम कैसे थोड़े से एफर्ट से किसी भी ओल्ड चीज़ को फिर से एक नई जान दे सकते हैं. Isn't it looking amazing? तो चलिए अब देखें कि हम इसे किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं in different ways. You can style it as a decor piece in your reading nook or a zen space. This will help light up the whole space. It can also be used as a decor piece in your Christmas decor near your Christmas tree. इसमें आप डिफरेंट हाइट्स के एलिमेंट्स और टेक्सचर्स ऐड कर सकते हैं टू एनहांस द एस्थेटिक्स ऑफ द स्पेस विद सम क्रिसमस रिलेटेड गुडीज अराउंड इट. Lighting up the candle near it will create a warm and beautiful ambience at your place. You can also keep it near your indoor plant and a planter. Keeping different elements with different heights and colors will definitely add up to the beauty of that particular nook. And when you light up the candle, the whole space looks aesthetically appealing to the eyes. You can also use it for your coffee table or dining table decor. You can place it on your tabletop and create a nice tablescape for your Christmas celebrations.
Here also, you can place elements with different heights, textures, and add up more candles to give the table a warm and appealing look. This way, you can have lovely candlelight meals with your loved ones. So, now you know you can create lovely vibes at your abode with just small tweaking to your old stuff and giving them a new life. Giving new life to your old stuff help our mother nature breathe a little bit more, and that brings an immense self-satisfaction. I hope you like this makeover. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icon. Till we meet again, stay safe, stay healthy and keep creating. Bye bye.